So this is the last problem of this lecture and also the last problem of this chapter. So I didn't teach you this problem in the class. It's a very difficult problem. Okay, so the overall efficiency of transformer is 90%, rated for 12.5 kilovolts. The primary voltage is 1100 volts and the ratio of the primary to the secondary coils or turns is 5:1. The iron losses at full load are 400 watts. The primary coil has a resistance of 1.82 ohms. At that condition, you have to find out or estimate how much power is lost because of the resistance of the primary coil, and B, what is the resistance of the secondary coil. So it's a quite difficult questions. Okay, now let's come toward this data. So as you see that it's a step down transformer. Okay, so let's VP is 1100 volts and VS is unknown, and the power output is 12.5 kilovolts over there, and the efficiency is 90% or 0.9. Here you are provided with the ratio of the number of turns in the primary and secondary. So primary has greater turns, secondary has less, so that's why I write is a step down transformer. Okay, then the potential difference you will obtain at the secondary coil or at the output is quite less as compared to the 1100 volts. And here you are provided with another new term, that is power loss in the transformer. So power loss in the transformer or total power loss is 700 volts. This is due to the resistance in the primary and secondary coil. And the resistance of the primary coil is 1.82 ohms also given, and you have to find the power loss in the primary. Okay, you have to find power loss. For power loss you will use I square R formula. So power loss in the primary is equal to question mark is unknown, and the last thing is resistance in the secondary coil. So you have to find the power loss in the primary and the resistance in the secondary coil. Okay, now let's start this numerical. In the solution, first of all, we will find potential difference in the secondary coil using equation of the EMF of transformer, that is Vs upon Vp or Ns upon Np. Equate this equation for Vs by placing their values. We will get our Vs is 220 volts. Okay, note down it carefully. Okay, now next thing is power in the primary coil. So from the equation of the efficiency, that is E is equal to PS upon PP, then power in primary will become PS upon E. So by placing their values, we will get our power in the primary coil, that is 13,889 volts or 13.8 kilowatts. Now we can find its current in the primary coil using equation P is equal to IV. So IP is equal to PP upon VP. By placing their values, we will get current in the primary coil is 12.62 ampere. Okay, now let's come towards our next variable, that is power loss in the primary. So from the equation of power loss in the primary coil, that is P is equal to I square R. So power loss in primary will become current in primary square multiplied by resistance in the primary. So by placing their values, we will get our power loss in primary is 290 ampere. Now we can find power loss in the secondary because we don't have the formula of power loss in the secondary directly.
अब हम पावर लॉस इन सेकेंडरी पर आ रहे हैं. So from the equation of power loss in the transformer, or the total power loss in the transformer is P loss total is equal to power loss in the primary plus power loss in the secondary. तो ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें इस फार्मूले से ही पावर लॉस इन दी सेकेंडरी निकालना होगा, क्योंकि हमें सेकेंडरी का करंट भी नहीं पता और रेजिस्टेंस भी नहीं पता. तो इसलिए हमने पहले प्राइमरी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की, क्योंकि हमारे पास पावर लॉस टोटल मौजूद है. पावर लॉस प्राइमरी अगर मिल जाता है, क्योंकि पावर लॉस प्राइमरी इस तरह से मिल गया हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस जो थी प्राइमरी की गिवन थी, तो इसलिए सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड की. रेजिस्टेंस हमें मौजूद थी लेकिन पावर मौजूद नहीं थी, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ करंट रिक्वायर्ड था. तो करंट निकालने के लिए हमें पहले पूरा काम पावर इन दी प्राइमरी पे करना पड़ा, जो कि लास्ट स्लाइड में आपको नज़र आया था. ठीक है. इसके बाद हमने पावर लॉस प्राइमरी फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर. अब हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को प्लेस करके पावर लॉस इन सेकेंडरी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, दोबारा सुन लीजिए इस बात को कि हम यहाँ पर हमें पावर लॉस सेकेंडरी चाहिए था, लेकिन हमारे पास पावर लॉस सेकेंडरी निकालने के लिए करंट इन सेकेंडरी, रेजिस्टेंस सेकेंडरी नहीं मौजूद. तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ी, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास पावर लॉस इन प्राइमरी आ रहा है. प्राइमरी का किसी हद तक डेटा अवेलेबल है, तो पावर लॉस इन प्राइमरी हमने देखें फाइंड आउट कर लिया. पिछली स्लाइड में जो भी काम हुआ था वो पूरा काम पावर लॉस इन प्राइमरी फाइंड आउट करने के लिए हुआ था. ओके, अब हम यहाँ से पावर लॉस इन सेकेंडरी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पावर लॉस सेकेंडरी विल बिकम पी लॉस टोटल माइनस पावर लॉस प्राइमरी 700 माइनस 290. सो पावर लॉस इन सेकेंडरी इज 410 वॉट्स. अब हमारे पास पावर लॉस सेकेंडरी आ चुका है, तो अब हम इसके करंट्स और इसके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, now for RS, using equation of power loss in secondary, that is P loss S is equal to IS RS. So RS will become P loss secondary divided by IS square, but IS is also unknown. तो अब हमें IS find out करना पड़ेगा. Now we have to find out IS. So for IS, using general power formula of the transformer of the coil, that P is equal to IV or PS is equal to IS VS. So IS will become PS upon VS, that is 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 equal to 56.8 एम्पियर. ओके, तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हो या आई वी हो या वी स्क्वायर अपॉन आर सारे बराबर होते थे, लेकिन वो कब होते थे? ओम्स लॉ में, जब ओम्स लॉ ओबे हो रहा होता था. लेकिन ट्रांसफार्मर में ओम्स लॉ ओबे नहीं होता. ट्रांसफार्मर इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस EMF. यहाँ पे कहीं का EMF अगर बढ़ता है तो वहाँ का करंट कम हो जाता है. करंट कम होने की बुनियाद पे ही क्या होता है, उसका वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा होता है. तो यहाँ पे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और IS VS बराबर नहीं होंगे. Now put this value of IS in equation 1. So equation 1 will become 410 divided by 56.8 square. Then our RS will become 0.127 ohm. Okay, now this is the end of this problem, and also the end of this lecture and end of this chapter also. I hope you will got it. It's a very lengthy chapter. It contains almost 38 or maybe greater than 38 numericals, more 38 numericals. So I hope you will get it, all the solution. If you have any query, if you find any problem in this, then you can contact me. Okay, thank you class. Allah Hafiz.